दोस्तों मैं और एक वीडियो लेके आया हूँ कमर चीमा सर का। और उसमें इंडियन होस्ट है सोनम महाजन। अ, इनके क्वेश्चंस को सोनम जी ने क्या रिप्लाई दिया है, बहुत ही मजेदार होने वाला है। शी इज क्वाइट गुड इन रिप्लाइंग पाकिस्तानी रिपोर्टर्स। शी इज एन एनालिस्ट। तो देखेंगे क्या रिप्लाई होगा, क्या कैसे करेगी, क्या क्वेश्चंस होंगे। मैं भी ज्यादा सुना नहीं हूँ, बट अभी देखेंगे अभी क्या होगा। बहुत ही मजेदार होने वाला है। देखते हैं अभी क्या होता है। मैं अभी वीडियो चालू करने ही वाला हूँ। लेट्स सी क्या होता है। कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं सोनम महाजन साहिबा। सोनम साहिबा, सबसे पहले तो आपके वक्त को बहुत शुक्रिया। Thank you so much for having me again. थैंक यू फॉर कमिंग, फॉर स्पेयरिंग टाइम। बड़े दिन हुए आपसे बात नहीं हुई। मैंने कहा आज ज़रा पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है, इंडिया में भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हो रही थी, तो आई जस्ट वांटेड टू गेट एन इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है इसके ऊपर, हाउ इंडिया इज़ लुकिंग थिंग्स इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में तो व्हाट वी हैव सीन कि देयर इज़ अ राइज ऑफ टेररिज्म, रिसर्जेंस हो रही है। हाँ दोस्तों, इससे पहले मैं फिर से चालू कर दूं वीडियो। मैं 2 एपिसोड में करने वाला हूँ इसको, क्योंकि 15 मिनट का एक एपिसोड बनाने वाला हूँ। थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस है, तो इसकी वजह से 15-15 मिनट का तीन तीन एपिसोड हो सकता है, क्योंकि एंड तक देखना है, क्योंकि एंड में भी मजेदार होने वाला है। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट अगेन। तो और पाकिस्तान जो है वो भी दहशतगर्दी से लड़ रहा है, इंडिया अपनी तरफ से कह रहा है कि वो भी लड़ रहा है, पूरी दुनिया लड़ रही है, ये नहीं कि कोई एक मुल्क नहीं लड़ रहा, सब लड़ रहे हैं। तो हाउ डू यू सी दिस रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान? डू यू थिंक कि इसमें, बिकॉज यू हैव बीन लुकिंग अफगानिस्तान एज वेल, आप क्या समझती हैं कि अमेरिका का अफगानिस्तान से निकलना वाज अ मिस्टेक? आप समझती हैं कि इस तरह निकलना गलती थी जिसकी वजह से ये दहशतगर्दी बढ़ी है? Because the Afghan Taliban have not been able to hold, they're still having, they're controlling some militant groups। वो वैसे तो वो खुद भी militant नहीं है अभी तक, उनको किसी ने recognize नहीं किया हुआ, लेकिन आप समझते हैं कि इंटरनेशनल पावर्स का वहाँ से निकल जाना, एम्बेसीज बंद हो जाना, दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो बढ़ी। हाउ डू यू सी दिस? Well, in India, we always had this understanding that supporting terror groups is not going to help any nation, be it Pakistan or any nation for that matter. Not that we could foretell, but we certainly could see to an extent that, once America or NATO is out of Afghanistan, things are not going to be as Pakistan is expecting things to turn out to be. टू आंसर योर क्वेश्चन कि अगर आप, अच्छा सॉरी, आप मुझे कहने वाले थे शायद उर्दू या हिंदी में बात करें, राइट? यस मैडम, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, हम सब की वैसी इंग्लिश नहीं है, तो हम चाहते हैं कि आप हमसे हिंदी या उर्दू में बात करें प्लीज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ट्राई करूंगी। थोड़ा थोड़ा बीच में स्विच करूंगी, प्लीज एडजस्ट मारी, ठीक है? जी, ये हम तो हमेशा से इंडिया में कहते आ रहे हैं कि द वे यूएस एग्जिटेड अफगानिस्तान was terrible to say the least. जिस तरह से उनको लास्ट डे में जिस तरह से उनको मारा मारी में वहां से निकलना पड़ा, दिस इज नॉट हाउ यूएस हैड प्लान्ड it in the first place, right? But I think Pakistanis or Pakistan as a state doesn't have the merit to comment on that, because पाकिस्तान में एक खुशी का माहौल था जब तालिबान ऑक्यूपाइड अफगानिस्तान। फिर पाकिस्तान के लिए एक एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंस भी कुछ लोगों ने ढूंढ लिया था कि अरे ये 15 अगस्त के दिन हुआ है, तो हम पता नहीं हमारी आईएसआई ने कितना बड़ा तीर मार लिया है। तो फॉर अस वी ऑलवेज न्यू कि ये एक डिजास्टर होगा पाकिस्तान के लिए भी, इस रीजन के लिए भी, और उन ताकतों के लिए भी जिन्होंने यहाँ पर इतना बड़ा जो है टाइम स्पेंड किया, अफगानिस्तान में इतना पैसा लगाया, बट इवेंचुअली व्हेन दे वर एग्जिटिंग दे
pretty much defeated the whole purpose of being in Afghanistan in the first place. अमेरिका का अफगानिस्तान में आना, जो उनका जो stated position है वो ये है कि they wanted to break the back of Al-Qaeda and other terror groups which could have global ambition. आज हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो ISKP है वो भी अब सर उठा रहा है. अब वहाँ पे जो अलकायदा के जो फाइटर्स थे वो भी अब धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं रीऑर्गेनाइज होने की, और उन्होंने अपना एक इंडिया का भी एक फैक्शन अपना एक उन्होंने तैयार कर लिया है. तो द होल पर्पस ऑफ NATO coming to Afghanistan pretty much got defeated. The way they concluded, their exit. But आई थिंक सबसे बड़ी गलती अगर किसी ने की है अफगानिस्तान को समझने में, तो वो मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान ने की है, वो अमेरिका ने नहीं की, वो और किसी प्लेयर ने नहीं की. बिकॉज आप दुनिया को बताते रहे ये बात कि भाई आप जो है अफगानिस्तान में आप अफगान्स को हरा नहीं सकते. दीज पीपल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ वॉरियर स्पिरिट. बट आपने खुद कहीं ना कहीं ये समझने में गलती कर दी कि अगर उन्होंने किसी और मुल्क की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं की तो वो पाकिस्तान की भी इंटरफेरेंस जो है वो एक लिमिट तक ही बर्दाश्त करेंगे. आप उनका बिग ब्रदर प्ले करने की कोशिश कर रहे थे, बट आपने तालिबान को सब कुछ आप ही ने सिखाया, किस तरह से अपने आप को मार्केट करना है, किस तरह से अपनी PR करनी है, किस तरह से दुनिया में घूमना है, and you have to sell yourself. In fact, Pakistanis were the ones who were telling the whole world, look, this is Taliban 2.0, they have broken the shackles of slavery, and please recognize them, please give them money, otherwise it will be a problem for the region. So I think आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि it will be a problem for you first and then the region. सही कह रही हैं. मेरा ख्याल है कई दफ़ा बच्चे बिगड़ जाते हैं, वो जिन बच्चों के ऊपर हाथ रखा होता है वो जब बड़े होते हैं, जवान होते हैं, तो वो फिर अपनी फ्लाइट खोल देते हैं. मेरा ख्याल है अफगान तालिबान भी उसी कैटेगरी में आए हैं. ऑब्वियसली वी हैव टू लुक इनवर्ड. उसमें तो बहुत सारी चीज़ें. अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि what do you think, what is India's design for Afghanistan? For instance, India is working with all Central Asian countries and particularly with Russia as well. Recently, जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने एक NSS की मीटिंग भी बुलाई थी. इरानियंस भी वहाँ पे थे. Do you think India has a plan for Afghanistan? One thing. और क्या इंडिया के पास कोई अफगानिस्तान के लिए प्लान है, या इंडिया इज जस्ट ट्राइंग टू बी डिफेंसिव होना चाह रहा है, और या अपनी एक शील्ड बस रखना चाह रहा है आगे कि whenever there is something going on in Afghanistan, we have an input, इंडिया का इनपुट. क्योंकि पिछले जो अशरफ गनी हो या बाकी लोग जो थे, तो इंडिया का एक अच्छा बड़ा स्ट्रॉन्ग इनपुट था, और that was recognized by the international community as well and by the Afghans as well. So what kind of an role India look in Afghanistan आइंदा आने वाले दिनों में? What is your understanding on that, please? I think for now, India will focus more on the defensive bit of it. Because हमारी एक पॉलिसी बहुत ही क्लियर है. कोई टेरर ग्रुप अगर हमारे मतलब इंडियन नैरेटिव को टाइम बीइंग के लिए फेवर भी कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट द TTP, they are not opposed to India in any way, right? In fact, उनके जितने भी उनके motives हैं, they are all against the state of Pakistan. But हमारी एक पॉलिसी बहुत ही क्लियर है that we do not trust terror groups, because they can like swing in any way, and you have learned that in the hard way by now, right? So for now our policy, जैसे ही जब I remember जब तालिबान took over काबुल, तब भी मेरी आपकी डिस्कशन हुई थी, तब भी मैंने आपको कहा था कि India's policy will be more of like waiting and watching and making sure that the Afghan territory primarily is not used for any kind of anti-India activities. We have received reports कि recently in the recent months बहुत सारे जो anti-India terror groups हैं which were based in Pakistan, they are slowly shifting their base to Afghanistan. So we are wary of that. But then जितना ये चीज़ इंडिया को concern कर रही है, I think दुनिया भर में अगर आप देखें, इवन जो TTP की रिसर्जेंस है उसकी वजह से भी it has got the whole world concerned in a way, because सबकी अपनी पहली बारी ये है कि जी अफगान टेरिटरी जो है वो हमारी कंट्री में कुछ दहशतगर्दी के हमले कराने के लिए या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी के लिए यूज ना हो. उसका प्राइमरी रीजन तो भाई ये है कि वहाँ पे जो गवर्निंग पावर अभी है, जो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं अफगानिस्तान में राइट नाउ, आई मीन इट्स अ टेरर ग्रुप.
It has multiple factions. There are moderate people within Taliban who probably understand a bit of PR, marketing, and diplomacy, but largely it is not a group that you can trust. And of all of us, Pakistanis will be able to tell that the most, because हो सकता है कि आपकी जो अफगान तालिबान के बीच में और आपकी जो हुकूमत है उनके बीच में भी एक कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि भी हम एक दूसरे को अटैक ना करें, बट जो एक तालिबान फाइटर जो चमन क्रॉसिंग पे खड़ा होगा, he is not necessarily going to take all the dictats from the higher ups, right? Because they have a brain of their own. आप उनको थोड़ा सा छेड़ेंगे, they will go nuts, and they understand the language of gun and they speak the language of gun. So for us, it's primarily going to be right now making sure that our people in Afghanistan are safe, our diplomatic officials, because many important embassies have been attacked in Afghanistan lately. And of course, we did have business interests, but I think jaise wo Taliban took over, those interests took a backseat, because we have a good understanding of the fact that it's not easy to do business with terror groups, and they are not they don't have a very, what do you say, टॉप डाउन अप्रोच कि आपने टॉप पे बात कर ली और फिर वो आपने जितने इनके नीचे जंगजू हैं उन्होंने उनको समझा दिया कि जी ऐसे ऐसे करना है. यू डोंट नो हाउ टू डील विद दीज गाइज, राइट? So we are primarily looking at our interest of national security, that Afghanistan में जो भी entire India groups भी जो जिनकी movements वहाँ पे हुई हैं, to keep a close watch on them also, and see if we could collaborate with other players to tackle that threat on time. अच्छा आपने बात की कोई इंडियन डिप्लोमेट्स हैं. Are there any Indian diplomats in Afghanistan yet? Of course, there are the Indian, as far as I know, I mean, the reports that I've read, of course, there are Indian diplomatic officials currently in Afghanistan. And in fact, the Taliban recently even had a meeting with them. I mean, Taliban forever have been trying to engage with India and telling them कि आप जो वो उन्होंने officials हमारे officials से recently उन्होंने meeting करके कहा है कि जी आप जो आपके projects हैं आप उनको complete करें, and we will provide you security and all of that. I mean, there've been engagements recently. नहीं वैसे ही तो बात है. तो डिप्लोमेट वहाँ पे क्या कर रहे हैं? या फिर आप समझती हैं कि वो जो हैं दे आर जस्ट Who told you the embassy is बंद वहाँ पे? नहीं, आपके तो सारे इवैक्यूएट कर लिए थे सब कुछ वहाँ से. Yeah, but it resumed, right? अच्छा It's been all over the media forever now. नहीं अच्छा, मुझे तो था कि क्योंकि वो चले गए हैं सारे, तो हमें तो था कि इंडियंस देयर नो मोर इंडियंस. वो सिर्फ बिजनेस के लोग रह गए हैं, जो कोई टेक्निकल लोग थे वहाँ पे. दे आर हेल्पिंग अफगान तालिबान फॉर कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह के रिलेटेड वही थे. आई थिंक वी डिडंट हियर कि उस टाइम पे तो और भी कंट्रीज हैं उनके जो भी सफीर थे वो भी निकल गए थे, बट राइट नाउ एवरीबडी हैज सम प्रेजेंस देयर, सो इट शुड नॉट कम टू पाकिस्तानीज एज अ सरप्राइज कि व्हाई इंडियंस आर स्टिल देयर. आई मीन, यू गेट ओवर दैट hysteria of if Indians are there something is going to happen here, it is happening anyway. मैं तो मैडम वैसी बात कर रहा हूँ, आप इतनी सीरियस इस पर वो नहीं है. मेरा नॉट पाकिस्तान ने भी रिकग्नाइज नहीं किया हुआ. व्हाई नॉट हैव अ रीजनल मैकेनिज्म if we have to target these transnational terror networks? Right. तो मैं ये वीडियो इधर ही स्टॉप करता हूँ, क्योंकि मैं अभी जो ये क्वेश्चन पूछा गया है ये कमर चीमा का ट्विस्ट है. तो इतने साल टेररिज्म को सपोर्ट करके अभी जब उन पे आ गया, तो ये लोग पूछ रहे हैं कि व्हाई नॉट इंडिया सपोर्टिंग पाकिस्तान इन फाइटिंग द टेररिज्म. ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं इसको, मसालादार था. तो इसका रिप्लाई सोनम जी का आएगा. मैं अभी अगला एपिसोड में मैं उसको आंसर का वीडियो दिखाता हूँ. तो मैं यहाँ मैंडेटरली मुझे 15 मिनट का वीडियो से ज़्यादा अपलोड नहीं होता है मेरा, तो इसकी वजह से मैं इधर रोक रहा हूँ. तो फिर मैं और एक वीडियो अभी इमीडिएटली अपलोड करूँगा, तो आपको सोनम जी का आंसर उसमें मिल जाएगा. तो कीप वॉचिंग. थैंक यू.